Hello students, so let's continue our chapter number 3, and today we're gonna learn tuples. Tuples are used to store multiple items in a single variable, just like list. Tuples are also used to store multiple items, like you can store any type of item in the tuple, like you can store integer values, you can store strings, you can store float, you can store complex numbers likewise. Okay. Second is tuple is a collection which is ordered and unchangeable. It means once you declare tuple, you cannot change the values of tuple. It means you cannot add values to the tuple, you cannot delete values from the tuple. It means tuple is unchangeable and it is ordered. It means order means tuple is indexed. Okay, so the next is tuple are written with round brackets, like a list are written with square brackets, and dictionary is written with curly brackets. Tuples are written with round brackets. Okay, and it allow duplicate values. It means you can add duplicate values to the tuple. Okay. So now we will learn some operations on tuple, like how to create tuple, how to update tuple, how to access elements of tuple, and how to delete tuple or delete elements from tuple. Okay. So first of all, we will see how to create tuple. Okay. So T1 is my name of the tuple is equal to in round brackets. You can write the elements of tuple, like I will write 1 2 3 4 5 6 7. Okay, this is my tuple, which is name of the tuple is T1, and tuple will be in the round brackets. Okay, so print type of T1. If I write type of T1, then it will print as class as tuple. Okay, so now you can create tuple of one element also, but you have to write comma. T2 is my next tuple. Okay, it has only one element, that is 4, but you cannot create with single element. If अगर तुम लोग के पास ट्यूपल में एक ही एलिमेंट है तो तुम लोगों को कंपलसरी उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा लिखना पड़ेगा. ओके, एंड इफ आई राइट प्रिंट टाइप of T2, then it is class of tuple. Okay, this is also a tuple without round brackets, but you have to write the comma, otherwise it will be a integer number. Okay, um, so to access the elements of tuple, okay, you can write print. If I want to access this element, that is 3, so I will write print T1 in bracket. 3 is on the position 0 1 and 2, so I will write 2. If I run this, it will print the element 3. If I want to print elements from 2 to 6, then I will write T1 in square bracket. I want to print 2 to 6. So 2 is on index 1 and 6 is on index 0 1 2 3 4 and 5. Okay, so 1 to 6. Okay, so it will print 2 to 6 number. Since 6 index is not included and first index is included. Okay, you can write this as well, print
तुम लोग स्टार्टिंग एलिमेंट दे के छोड़ भी सकते हो। लाइक मैंने आई टू टू मुझे ऑल एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, टू टू ऑल। ठीक है, इंडेक्स टू टू ऑल। ठीक है, 0 1 2 3 से मुझे सारे एलिमेंट मिलेंगे। अगर मैंने किया प्रिंट T1, स्टार्टिंग से लेके मुझे 4 तक सारे एलिमेंट चाहिए। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स तक। तो मुझे क्या मिलेगा, स्टार्टिंग से 1 2 3 एंड 4। फोर्थ एक्सक्लूडेड मतलब थर्ड तक वो मिलेगा तुम लोग को एलिमेंट। ठीक है, तुम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हो। प्रिंट T1 ब्रैकेट में -1, नेगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हो। नेगेटिव मतलब पीछे से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, तो जो लास्ट में जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 होता है, ये -2 होता है, -3 -4 -5 -6 एंड -7। ओके, अगर मुझे देना है प्रिंट T1 ब्रैकेट में -4 टू -1। ओके, तो -4 to -1, -1 excluded and -4 included, -1 -2 -3 -4। तो 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि -1 इज एक्सक्लूडेड। लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूडेड रहता है, फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव इंडेक्सिंग। या तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो फ्रेंड, T1 -4 to all। तो क्या आएगा, -4 टू सारे एलिमेंट आएंगे एंड तक। ओके, अगर तुम लोग को जो ट्यूपल है उल्टा उल्टा अगर प्रिंट करके लेना है तो T1 कोलन कोलन -1 करोगे तो उल्टा डिस्प्ले होगा। ठीक है, एज यू कैन सी उल्टा डिस्प्ले हो रहा है पूरा ट्यूपल। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स। कैसे तुम लोग स्लाइस कर सकते हो उसको, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हो, ये सब मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो है update operation, but since tuple is unchangeable, तुम लोग tuple के एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। वंस डिक्लेयर तुम लोग उसको ट्यूपल को चेंज नहीं कर सकते, तो तुम लोग अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते ट्यूपल पे, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तुम लोग रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तुम लोग डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ तुम लोग ट्यूपल को डिलीट कर सकते हो। डिलीट कीवर्ड से पूरे ट्यूपल को तुम लोग क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं वापस से प्रिंट करूंगी T1, तो मुझे क्या आएगा, एरर आएगा, सिंस मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया ट्यूपल को। ठीक है, ये देखो एरर आ रहा है क्योंकि इज नॉट डिफाइंड, सिंस मैंने ट्यूपल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो तुम लोग अपडेट ऐड रिमूव ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते ट्यूपल पे, सिंस ट्यूपल इम्यूटेबल होता है और वो अनचेंजेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते। कोई भी एलिमेंट तुम लोग मूव नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। सिर्फ तुम लोग ट्यूपल होल ट्यूपल डिलीट कर सकते हो डिलीट कीवर्ड यूज करके। आई होप तुम लोग को ये ऑपरेशन समझ में आ रहा है। So now we will learn some operations that we can do on that we can perform on tuple. Okay, so the first operation is to check if some elements are present in tuple or not. Like my tuple is T1 is equal to apple, mango, comma, kiwi. Okay, so I want to check whether kiwi is present in list or not. Oh, sorry,
present in tuple or not. So condition is if kiwi in T1 print yes. It is to check whether a particular element is present in a tuple or not. Okay. So it is present. It is yes. Okay. So the next operation is loop through tuple. Okay. Uh, to display all the elements of tuple. Okay. So for I in T1 print I. Okay. So it will print all the elements of tuple. If I is in T1, that is in T1, so it will print all the elements of T1. If I run this apple, mango, and kiwi, so it is used to loop through the tuple. Okay. So the next operation is join operation. You can join two tuples like T2 is equal to if it is 6 7 8. Okay, so T3 is equal to T1 plus T2 and print T3. If I run this it will display T3 as apple, mango, kiwi 6 7 8. Okay, it will join two tuples and form the new one. Okay, so these are the operations you can perform on tuple. Okay. So now we will learn some tuple methods. Okay, so first of all I will create one tuple. Okay, so tuple is T1 is equal to in uh, round brackets, suppose my tuple is mm, apple comma mango comma banana. Okay, so so the first method is I will take one more apple. Okay, so the first method is to count the occurrences of elements. Okay, so x is equal to t1 dot count. तुम लोग को काउंट फंक्शन यूज करना है एंड ब्रैकेट में देना है जिसका भी तुम लोग को अकरेंस फाइंड आउट करना है. सपोज मुझे करना है एप्पल का. ठीक है. प्रिंट एक्स. ओके, सो एप्पल दो बार अपियर हुआ है तो इसका काउंट आएगा 2. ओके, सो द नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स. ओके, so print max of T1. It will print the maximum element. Since these elements are strings, sorry, mango will be the largest element. Okay, and alphabetically print minimum of T1. Okay, so minimum element will be apple alphabetically. Okay, so the next is length. So I will write print length of T1. It will calculate the length of string, sorry, length of tuple. I will write it as max min and as length. Okay, and this as count. Okay, so if I run this,
Max is mango, minimum is apple, and length is 4, and appearance count is 2. Since apple appears 2 times in the tuple. Okay, so the next I will take another list, that is T2 is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4. Okay, and I want to count to calculate the sum of tuple. Okay, it will add all the elements of tuple. Okay, so print sum of T2. Okay, if I save this, so sum is 10. 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 is 10. Last operation is index, to find the index of particular element. Suppose I want to find the index of 4. Print t2 uh, dot index, एंड इन ब्रैकेट जिसका भी तुम लोग को इंडेक्स फाइंड आउट करना है, सपोज मुझे 4 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है. So output is 3. Since index fourth है 0 1 2 and 3, third position पे है 4. Okay, so index of 4 is 3 and sum of T2 is 10. Okay. So this is all about tuples in Python. Okay. So if you have any queries, we will solve during the online session. Okay. Thank you.